Let's spend a moment talking about what Ankur just mentioned, which is the importance of knowledge about personal finance in your life. Growing up, I saw so many people who had 8 or 10 insurance policies. I mean, you can die only once. Like, why do you have all these insurance policies? It kind of makes no sense. So pick one good one rather than have all of these multiple insurance policies in your war against fixed deposits. And even really smart people in our office are investing in penny stocks, are investing in insurance, and it's not even in insurance. Like, how are you investing in insurance? You're waging this war, but are you able to do this at scale? And what's your advice? Like, should this be a fixed part of school and college curriculum so that you have some basic understanding of the tenets of personal finance? 100%. If I could change the curriculum and introduce one subject, it would be personal finance. Not because it is about making money. It is about understanding your relationship with money. People will have a very different approach towards money, basis how they were raised, their experiences, and so on. And they need to have an understanding of that. So it's unfortunate that it's not there. It's also very exciting that the internet allows for all of this information and education to be available to everybody. So it doesn't need to be in the top schools, in the best mediums. Literally anyone with a phone and an internet connection now has access to the same personal finance education that you and I would have. And that is certainly a shift. And the saving grace is Rahul, is if my data is not wrong and my news is not wrong, then as of last month, this was the first month ever where the deposits in mutual funds were higher than the deposits in fixed deposits in this country. It's never happened before. So I think it's a good first step and a good first month. Heading in the right direction, but then comes the urge to get rich fast. Yes. And then you start investing in all kinds of shady cryptocurrencies, many of which are just Ponzi schemes. And you're investing, as I said, in penny stocks, thinking, isse paisa ban jayega. So the switch from the safety of a fixed deposit to the kind of stress that comes with the volatility of a cryptocurrency. Yeah, it's insane. And these, by the way, coexist. I know of individuals who would park 90% of the money in a fixed deposit and then literally gamble with the 10%, which is like ki रातों रात दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, and then हम बेच देंगे and फिर हमें fixed deposit की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. And that's the nature of how the human mind works. We'd love to take shortcuts with the hope that we wouldn't have to slog through the daily grind. And we still have that daily grind because that's the only thing we know. And the only advice that I often tell people, and this will be the same for this audience as well, do not ever put your money in anything which will make you lose your sleep. That's it. That is as simple as that. I'm not even qualifying कि वो कहाँ है. कुछ लोगों के लिए क्रिप्टो में पैसा डालना is perfectly fine, क्योंकि उनकी फितरत वैसी है. कुछ लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में भी पैसा डालना डरावना है बिकॉज उनकी फितरत वैसी है. सो डू नॉट पुट योर मनी इन एनीथिंग दैट मेक्स यू लूज योर स्लीप बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट. इट वुड नेवर बी वर्थ इट. Cool. Let's take some more questions. Okay, the gentleman in the yellow check shirt. You know, the other cool thing is, just by the number of people who are putting their hands up, we have a packed house at the back, is that he's made personal finance interesting and cool. I think that's quite awesome because personal finance is generally considered very dreary, boring, formulaic. You know, you kind of made it cool, which is nice. Go ahead, please. Hi, Ankur. Ankur, I'm Mohit, और मुझे आपसे एक बात पूछनी है. You know, आपने भी बहुत अच्छी बात बोली थी किसी को about people, product and profits. और मैंने आपको आपकी लाइफ में करते हुए देखा है. जब आप नियर बाय में थे, आप लिटरली अपने कस्टमर्स को लिंक्डइन पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. मैंने आपको पीपल्स में इन्वेस्टेड देखा है और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में. बट एक जगह पे आके कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ कि मेरे बिलीफ पे क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन ऑन बिलीफ अबाउट अंकुर वारिकू. आप जब तक नियर बाय में थे, आप एक पीपल्स पर्सन थे. आप जब तक नियर बाय में थे, आपके पीपल थे वो लोग जो नियर बाय को यूज करते हैं. आप कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. लेकिन जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बने तो आपके पीपल हैं वो लोग जो आपका कंटेंट देखते हैं, जो आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं. मुझे याद है मैं आपके कंटेंट के लिए आपको व्हाट्सएप पे अप्रिशिएट करता था और इट वाज गुड. आप पैसा इन्वेस्ट, आपने एक वीडियो बनाया था हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी इन योर 20s या 30s पे कुछ वीडियो बनाया था. तो मैंने एग्जैक्टली आपके वीडियो को देख के अपने पैसे को रेप्लिकेट करने का ट्राई किया. और रियल एस्टेट को लेके मुझे क्वेश्चन आया था
मैंने आपको व्हाट्सएप किया कि एंड आई एम योर पीपल, आई वॉज योर पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया और आपने मुझे ब्लॉक कर दिया. मुझे रीजन समझ नहीं आया. मैंने आपको ईमेल भेजे, आपने मुझे एक रिप्लाई नहीं दिया, एक रिप्लाई नहीं दिया. मैंने आपको 2, 3, 4 भेजे, आपने एक रिप्लाई नहीं दिया. मेरे को ये जानना है अंकुर कि वो अंकुर जो पीपल्स पर्सन थे और ये अंकुर जिन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट शिफ्ट? या मतलब या तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ मोहित आई वाज रॉन्ग, मैंने गलत किया, या आप ये कह सकते हैं कि मोहित दिस वाज द रीजन ऑफ माय शिफ्ट. वो जो पीपल्स पर्सन थे फिर नहीं रहे आप तो पीपल्स पर्सन ना. इसको कहते हैं बाउंसर है. वो बेचारा बैटिंग कर रहा है, बहुत पीछे से आई, सर पे लगी. चलिए भाई अंकुर बताइए क्यों ब्लॉक किया आपने? आपका नाम मोहित है, मैं आज ही आपकी ईमेल का जवाब दूंगा. लेकिन मोहित, ये एक जिंदगी में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा. आई डोंट नो यू पर्सनली, सो प्लीज टेक इट फॉर वट एवर इट इज, शायद बड़े भाई के रूप में. आपने जो किया वो एक 1-to-1 रिलेशनशिप थी. मैंने अंकुर वारिकू को ईमेल लिखी. अंकुर वारिकू की जिंदगी में 1-to-many रिलेशनशिप्स हैं जहां मुझे बहुत सारे लोग लिखते हैं. दैट डजंट मीन कि मुझे मोहित से कोई दुश्मनी है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी. इट इज जस्ट द एबिलिटी टू अटेंड टू इट एट स्केल. दैट्स द ओनली थिंग. सो द मिनट इट बिकम्स हार्डर, you should never try to make the one-on-one relationship that you have had as the only relationship that exists. आपको हमेशा ये सोचना होगा जिंदगी में हमेशा कि जो मैं ये इंटरैक्शन इनिशिएट कर रहा हूं, दूसरे इंसान के लिए वो इंटरैक्शन कैसे रिसीव हो रही होगी. एंड इफ दे आर रिसीविंग इट इन अ कंप्लीटली डिफरेंट फैशन फ्रॉम हाउ यू सेंट इट, then that may be the simplest reason of why that interaction was not received in the way.